So here recall that. So in the last lecture, what we assume a function f which is defined on an open set in Rm, taking values in Rn. For this function, we assume that partial derivatives djfi exist for each j running from 1 to m, and for each I 1 to n. Okay, so partial derivative of component functions, they exist. So this means if they exist, अगर यह exist करते हैं partial derivative, तो ये फिर से एक फंक्शन है a से rn में, a से r में, तो हम उसके पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं. तो हम क्या बात कर सकते हैं? वी कैन टॉक अबाउट डी के डी जे एफ आई. ओके, जिसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, so it is called the second order partial derivative of component function fi. अब बात आती है कि कब डी के डी जे एफ आई. सो क्वेश्चन इज डी के डी जे एफ आई इज सेम एज डी जे डी के एफ आई, whether this is true or not. So for that, in the last lecture we saw this example. So we considered this function which is defined on R2, taking values in R. So this is a scalar valued function defined like this. We saw the partial derivative. So second order partial derivative of f exists, but they do not commute. Okay, so मैंने आपको एक एक्सरसाइज इनफैक्ट दिया था, आप लोगों ने शायद सॉल्व किया हो. तो अगर नहीं किया है तो इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या इस फंक्शन के जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, मीन्स d1 d2 f एट 0 और d2 d1 f एट 0, क्या दोनों इक्वल नहीं है? वाकई में इक्वल नहीं है, ये चेक करिए. तो आज हम एक रिजल्ट देखेंगे जो ये गारंटी करता है कि अगर हम f में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस और ऐड करते हैं, ओके, नॉट मेयरली एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे ज्यादा कुछ हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड करें f में, तो हम पाएंगे कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डी के डी जे एफ आई है वह सेम एज डी जे डी के एफ आई होगा, मीन्स दे कम्यूट. ओके, now so what is our result? So let me write the statement of theorem. Let A be an open subset of Rm and f be a function from A to say R. This be a function of class C2. C2 means इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए और वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी हों. ओके, सो C2 means all second order derivative exist and are continuous. Then for each A in A, what we have is dk dj fa is same as dj dk fa.
Okay, so we will prove this theorem. So here is the proof. So we will divide our proof in two steps. In first step, we will prove a certain second order mean value theorem for f, and in second part we will show that in second step हम दिखाएंगे कि डी के डी जे एफ ए जो है वह बराबर है डी जे डी के एफ ए के बराबर। क्योंकि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, अगर हम जे एथ कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब केवल जे एथ कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, बाकी कोऑर्डिनेट फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट हैं। सिमिलरली हम जब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डी के डीजे जब हम कंसीडर करेंगे, इस केस में दो दो कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे, kth और jth कोऑर्डिनेट। फर्स्ट केस jth कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, आप देखिए इधर। सो पहले केस में jth कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, दूसरे में सेकेंड टाइम kth कोऑर्डिनेट में हमें मात्र दो कोऑर्डिनेट्स की ही आवश्यकता है, बाकी कोऑर्डिनेट्स फिक्स रहेंगे। ओके, तो यह दर्शाता है कि अगर हम इस ओपन सेट ए को आर एम में न लेकर, जहां आर एम में हम कंडीशन डालते हैं कि m इक्वल टू 2, तो हमारा काम बन जाएगा ना, केवल क्योंकि बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स हैं। तो अगर हम m इक्वल टू 2 लेके काम करें तो हमारा काम चलेगा, स्मूथली चलेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर m इक्वल टू 2। सो लेट मी राइट दैट थिंग। सिंस for calculating dk dj fa and dj dk fa, we vary two coordinates, which one, kth and jth, these two variables. It means the remaining variables are constant. It means the remaining variables are constant. Okay. Therefore, it is sufficient to prove the result in the case when m equal to 2, for m equal to 2. Okay, so as I said earlier, we will prove this result in two steps. In first step, we will prove a certain second order mean value theorem. So here is the step 1. So in this step, we prove a certain second order mean value theorem. Mean value theorem for f. Okay, we are in R2, so let me draw a figure. So suppose we have this A, and now we have now we take any arbitrary point of A. So this is open set A. Take an arbitrary point A here. Okay. Okay. So since we are in R2, let me take it A comma B. Okay. So let A comma B be an arbitrary point of A. You know this A is open. A is open. This means this uh, this point AB, this is an interior point of A. Okay. So what does this mean?
This means as A is open, there exists a positive number, a real number, such that whenever we take a vector with norm less than delta, this implies this implies a plus h comma b plus k. This point belongs to A. Okay. So uh, good. So here we have this. Now we choose a vector hk in R2 with norm less than delta. Now we fix a vector hk in R2 with norm less than delta. Okay. So so see here. Uh, so this was the point AB, and so suppose I move in H. So okay. So let me take A plus H. So A plus H would be, so this is A, this would be A plus H, okay, and this point is B, and see here this would be some B plus K, okay. So what I will get? I will get this A comma, this is A plus H comma B, then A plus H comma B plus K. All these points are inside A, okay. So this point is what is this point? This is A comma B plus K. Okay, all these points lies in A. Let me call this rectangle Q. So we chose such a vector HK with norm less than delta, such that this rectangle Q lies entirely in A. Okay, good. Now what we do, we define lambda HK. Lambda HK is okay. So we want to use mean value theorem. Okay, we want to use mean value theorem. So we will play a trick here. So we need something f a plus h comma b plus k minus f a comma b plus k. So we will move in some case we will move in x direction, then we will fix x direction, and we will move in y direction. So this is what we will be doing. Okay, so here we take this. So f a plus h b plus k minus f a comma b plus k. We then take f a plus h comma b minus f a comma b. You see, in this only, so the y coordinate is fixed. So x coordinate is varying. In the second part here, uh, this y, so here also y coordinate is fixed, and and this x coordinate is varying. Okay, so what I have I did a mistake, so let me fix that mistake first. A comma a plus h comma b plus k, good. A comma b plus k minus, then ab, so this is plus.
it should be plus. Okay, now our claim is, we now claim that there exists points P and Q in this rectangle Q, this rectangle Q, such that lambda hk equal to d2 d1 f p h dot k and lambda hk equal to d1 d2 f fq hk. So how do we do that? So let us do. So to achieve this claim, we define a function phi from an interval b comma b plus k to r, given by phi s equal to f a plus h comma s minus f a comma s. Okay. So you see, what is phi a plus what is phi b? What is phi b? What is phi b? Phi b is f a plus h comma b minus f a comma b. This is phi b. And what is phi b plus k? This is f a plus h comma b plus k minus f a comma b plus k. Okay, so using these two, what you get, phi b plus k minus phi b, you subtract phi b from phi b plus k, you will get f a plus h comma b plus k minus f a comma b plus k minus f a plus h comma b plus f a comma b. Now compare this with here, okay, with this. So you see, this is same as this thing. This is nothing but lambda hk. This is lambda hk. Okay. So what we get is lambda hk is phi b plus k minus phi b. Since we know that this f is of class C2, means it is the second derivative of f exists and they are continuous. So means first derivative और so इसके पहले first partial derivative जो है वह सब एग्जिस्ट करते हैं और वह कंटिन्यूस है, क्योंकि ये C2 फंक्शन है. C2 फंक्शन हमेशा C1 होगा. ओके. तो क्योंकि अब ध्यान दीजिए, इस पोजीशन पे हम क्या देखते हैं, यहाँ आपका कौन से ये जो फंक्शन फी है इसका सेकंड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है. ओके, ये हमारा वेरिएबल है, एस वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा है एफ के सेकंड कोऑर्डिनेट पर. ओके, एफ R2 से R में एक फंक्शन है और फी जो डिफाइन कर रहे हैं वह एफ के सेकंड कोऑर्डिनेट में वेरी कर रहा है. करेक्ट. एस जो है वह सेकंड कोऑर्डिनेट है और हम जानते हैं कि एफ
पार्शियली डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, मींस d2f एग्जिस्ट करता है, d2fxy एग्जिस्ट करता है। ओके, सिंस दिस एग्जिस्ट ऑन ए, इसका मतलब यह फी जो है वह एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। Since this what we get is phi is differentiable on an open set or an open interval containing this closed interval b comma b plus k। ओके, अब ध्यान दीजिए, यह फंक्शन फी डिफरेंशिएबल है एक ओपन इंटरवल जो कि क्लोज्ड इंटरवल b और b प्लस के, b कॉमा b प्लस के को कंटेन करता है, वहां पर ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल b कॉमा b प्लस के, so it satisfies the conditions of mean value theorem। okay, so one dimensional mean value theorem of single variable, correct? So we use that mean value theorem. By mean value theorem of single variable, there exists, क्या कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, कि एक पॉइंट b और b प्लस के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा, such that okay, let me call that point t naught in b comma b plus k, such that phi b plus k minus phi b equal to phi dash t naught into k, correct? So this is what we get. But what is phi dash t naught? What is phi dash t naught? ओके, यहां पर हमें फी दिया हुआ है, फी का डेरिवेटिव एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, सो फी डैश एस इज डी टू एफ ए प्लस एच कॉमा एस, तो वो पॉइंट टी नॉट पे है, तो सो 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 फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, फी डैश एस इक्वल टू डी टू एफ ए प्लस एच कॉमा एस minus d2 f a comma s, correct? So what would be phi dash t naught? This would be d2 f a plus h comma t naught minus d2 f a comma t naught। okay, now अब ध्यान दीजिए, ये d2 f a plus h comma t naught और d2 f a comma t naught ये एग्जिस्ट, क्योंकि C1 फंक्शन है ना, f जो है f इज ऑफ क्लास C2, सो इट इज ऑब्वियसली C1, सो C2 है, तो इस कारण इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो लेट मी राइट, फर्स्ट I put this value there, so what is phi b plus k minus phi b? This is, I have written it here, it is lambda hk, let me put that value here, so this is lambda h comma k, so this implies lambda h comma k equal to what? This is d2 f a plus h comma t naught minus d2 f a comma t naught into k। ठीक है, अब टी नॉट फिक्स कर देते हैं, टी नॉट को फिक्स करते हैं, और
दूसरा फंक्शन, सो डी टू एफ एस कॉमा टी नॉट पर बात करते हैं. नाउ फिक्स टी नॉट and we consider the function d2fs comma t naught. तो अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को वेरी कर रहे हैं. ओके, so this d, because f is of class c2, d2f is differentiable and that derivative is continuous. So this d2fs comma t naught itself is continuous and it is differentiable. So this is differentiable for S. So which interval do we take? We will take A to A plus H. Okay, for S in an open interval I containing the closed interval, containing the closed interval A comma A plus H. Okay, now we apply mean value theorem. We apply mean value theorem. So what we get from mean value theorem? There exists uh, say S naught between A comma A plus H such that d2f A plus H comma T naught minus d2f A comma T naught इक्वल टू. सो अब क्योंकि d2 ये f को f के फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं तो हम पहले कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज d1 d2 f s naught t naught dot h. Okay, this means now we put this value, we put here. Okay, okay, so this implies, therefore what we have is we have lambda h comma k equal to d1 d2 f s naught t naught dot h comma k. Let me write this s naught t naught as q, d1 d2 f q dot h comma k, h dot k. Okay, so one part we have proven, so this part we have proven. In similar line, one can prove the above part also. Okay, this part. So it is also proven in same line. So similarly, we prove we prove lambda hk equal to d2 d1 f p hk for some p in q. Remember this q here, this q here is nothing but s naught t naught. Okay, so let me write here where q equal to s naught t naught. Okay, so uh, we have proven the second order mean value theorem for f. Now we come to step 2. In this step we will show that d1 d2 f is same as d2 d1 f. Okay, ah, so so given the point a comma b in a, remember a is open,
So there exists T positive such that a closed rectangle A comma A plus T cross B comma B plus T, this is entirely contained in A. Okay. So as shown in step 1, there exists point S0 T0 and point S1 T1 in A comma A plus T cross B comma B plus T, such that, or let me write in words, so in here such that lambda T comma T equal to T square D1 D2 F S0 T0, and lambda T comma T is T square D2 D1 F S1 comma T1. Okay. So what we get? We get this implies D1 D2 F S0 T0. This is equal to lambda T comma T divided by T square. This is same as D2 D1 D2 D1 F S1 T1. Okay. So this is what we get. Now what we do, we let this T go to 0. If we let T moves to 0, then this S0 T0 will go to, see here. So this, when this T go to 0, this A plus T goes to A, B plus T goes to B. So it means S1 T1 go to A comma B, S0 T0 go to A comma B. Okay. Then S0 comma T0, this approaches to A comma B, and S1 comma T1, this also approaches to A comma B. Now use D1 D2 F and D2 D1 F. They are continuous only because F is of class C2. Since D1 D2 F and D2 D1 F are continuous on A, it follows that limit T goes to 0, D1 D2 F S0 T0, this is equal to D1 D2 F A comma B, and you know this is same as limit T goes to 0, lambda T comma T divided by T square, and this was same as what limit T goes to 0, D2 D1 F S1 comma T1, but because D1 D2 F again, sorry, D2 D1 F is continuous and S1 T1 goes to A comma B, so this is D2 D1 F A comma B. So we get our claim. Okay, so this is equal to, so you see this is same as this, it's same as this. So what we get is, this implies D1 D2 F A comma B is same as D2 D1 F A comma B. Okay, so we get our desired result. So I'll stop here. In the next lecture, we will see some other properties of derivatives.